Good morning students, this is Priya, your science teacher. In this video I will be explaining you the chapter number 13 of your textbook, that is motion and time. In this chapter we will study about the motion, about the speed, about the types of motion, the unit of speed and time, about the structure of the simple pendulum and the oscillation and the time period of simple pendulum. At last we will learn how to draw a line graph of distance and time. So let us start the chapter. First of all, what is the speed or motion? The movement of an object in per unit time or in a particular time period is called its speed, or we can say it is a motion of an object. Speed, it is basically, the formula of the speed is basically the distance covered divided by the time taken. So the basic unit of speed is meter per second, or you can say that it can be written as in kilometer per hour. The next is the type of motion. There are two types of motion, that is non-uniform motion and uniform motion. If the speed of an object it move along a straight line keeps changing its motion with time, then it is said to be in a non-uniform motion. For example, the moving of a car or moving of a bus is an example of a non-uniform motion. In a uniform motion, an object it moves along a straight line, does not change its motion with respect to time, then it is said to be in a uniform motion. Okay, in the case of uniform motion, the average speed of the object is same as the actual speed. For example, the rotation of earth or the revolution of earth, it is an example of the uniform motion. The next is the measurement of time. Basically, in our ancestors or in the past ancient times, for measuring time we use sundials, water clocks and sand clocks, like you can see in the picture. But nowadays we use the digital watches or the clock watches for the measurement of time. We make use of the periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of the simple pendulum. As you all know that periodic motion, it is the type of motion in which an object changes its motion after a fixed intervals of time. For example, a rotation of earth is an example of a periodic motion. A simple pendulum, the movement of a simple pendulum, it is an example of a periodic motion. So these are some examples of the periodic motion. So let us understand the structure of a simple pendulum. The simple pendulum, it basically consists of a small metallic ball in the bottom of its part, which is called a bob. It is suspended from a rigid stand by a thread. When the bob of the pendulum it is released after taking it slightly to one side of its position, it begins to move in a to and fro motion. This to and fro motion of a simple pendulum is an example of an oscillatory or a periodic motion. It is an example of a periodic motion because it repeats its movement after a fixed interval of time, and it is an oscillatory motion because of its to and fro motion. So this is the one extreme position of a simple pendulum. You can in this picture you can say that it is the one extreme position of the simple pendulum, and the center of the simple pendulum, it is the mean position, or we can say that it is the center position of the simple pendulum. This is the central position or the mean position of the simple pendulum. This is the second extreme position of the simple pendulum. So let us understand what is called an oscillation of a pendulum and what is the time period. The one oscillation, the pendulum is said to have a complete its one oscillation when a bob it moves from one extreme position A to the other extreme position B, and then it comes back to its A position. Then we can say that a pendulum it completed its one oscillation. The next is the time period. Time period is the time taken by the pendulum to complete its one oscillation is called its time period. Time period can be calculated by the relation, that is T is equals to 2 pi under root L by G, where T is the time, L is the length of the pendulum and G is the gravitational force. So let us understand the oscillation of a simple pendulum. This is the one extreme position of a simple pendulum, that is the A, and this is the second extreme position of a simple pendulum, that is B. So when this pendulum starts this motion from the one extreme position to the other extreme position, and then it returns back to its original position, then we can say that this is a one oscillation. We can say that one oscillation, and the time taken by a simple pendulum to complete this oscillation is known as the time period. The next is the basic unit of time and speed. The basic unit of time is second. Its symbol, or we can denote it
as by s. The basic unit of speed is the meter per second. While driving a vehicle, we can you have noticed there are two types of meter that are present inside a vehicle. The upper picture, that is the of the odometer. This odometer, it simply tells us about how many distance we have covered yet, and the second one that has the indication of kilometer per hour, it is the speedometer. It tells us about the distance covered in a particular time period. So there are two types of meter present in a particular vehicle, that is odometer and speedometer. Speedometer is a device which records the speed, and it records the speed directly in kilometer per hour. Odometer is the device which is used to measure the distance covered by the vehicle. The next is the graphical representation of a particular data. We can represent the data in the pictorial form by the three ways, basically the bar graph, pie chart and line graph. In this chapter you have to focus basically on the line graph. Okay, this is the diagram of the bar graph, this is the diagram of a pie chart, and this is the line graph of weight and age of a particular person. दिस इज बेसिकली द लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ में हम बेसिकली दो पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है. ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. इस पे हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं. नॉर्मली देयर आर 4 एक्सिस दैट इज प्रेजेंट. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स डैश, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द वाई डैश. इन दिस side we have to take the positive values and in this side we take the negative values. तो normally हम सिर्फ ये वाला पार्ट ही इंडिकेट करते हैं ग्राफ में, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसमें हम एक्स एक्सिस लेते हैं, और वर्टिकल एक्सिस जो है जो हम वाई एक्सिस लेते हैं. अगर हमें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं. मान लो नीचे वाले पैरामीटर एक्स एक्सिस में हमने ले लिया है टाइम, दैट इज 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट्स, 8 मिनट, 10 मिनट, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है डिस्टेंस के पैरामीटर, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, ठीक है. हमें एक पर्टिकुलर डाटा दिया है, पर्टिकुलर वैल्यू दी है कि 2 मिनट्स में एक पर्सन ने 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है. तो हम 2 मिनट्स पे एक डॉटेड लाइन खींच देंगे, ठीक है, और 10 मिनट्स पे भी एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन खींचेंगे. इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उसे हम एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट, अगर हमें 4 मिनट्स में एक पर्टिकुलर पर्सन ने 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, डॉटेड लाइन्स, उस पर हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मीट कर देंगे उनको. ऐसे ही हम 6 मिनट्स में उसने 30 किलोमीटर्स किया है, तो हम पॉइंट ऑफ 6 मिनट्स में, उसके बाद ये जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन्हें हम जॉइन कर लेंगे. अगर आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, ठीक है, जैसे ये ग्राफ दिखा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, तो हम बोल सकते हैं कि द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है. और अगर आपका ग्राफ डिस्टेंस वाई एक्सिस से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो तो उसका कांस्टेंट है, ठीक है. इसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. So these are the 3 types of line graph of distance and time by which you can understand the movement of an object. In the first graph, the y axis पे हमने लिया है डिस्टेंस और x एक्सिस पे हमने लिया है टाइम. आप इसमें देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन. सो यू कैन से दैट कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. सो यू कैन से दैट इन द फर्स्ट ग्राफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. इन द सेकंड ग्राफ, ठीक है, उसकी डिस्टेंस क्या है, उसकी स्पीड क्या है, एकदम से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है. सो इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन the speed of an object is increasing rapidly or it is accelerating, ठीक है. in the third type of graph you can say that जो distance जो है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम पीरियड. मतलब टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा है. इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है. I hope you have understood this chapter very well. Read your NCERT textbook and if you have any doubt you can contact me anytime. Thank you.